we were having the theorem, that basic proportionality theorem, that says that if we are having a triangle, and the name of the triangle, I'm taking it the way it is given in our book, because that way we'll be taking the name and that way we'll be doing the proof. So if we are having a triangle ABC, and if there is a line DE which is parallel to BC, okay, and intersecting the other two sides at D and E, then the ratio we have to prove that, see, still you don't have to copy anything. We have to prove that AD by BD is equals to AE. Am I audible to all of you? Please confirm. Yes, ma'am. We have to prove that AD by BD is equals to AE by EC. I said to you, yes, this proof is little bit confusing, but you don't have to memorize it. You have to understand it. Okay. So what I was explaining in the last class, that at first we will be doing few construction. Again, I am doing it. We will be dropping a perpendicular from the vertex D like this. And this is a perpendicular and altitude we have drawn. Similarly, we will be drawing an altitude from E, and this is 90-degree. Carefully we are drawing it. Apart from that, few more construction we are doing. We are joining B with E and we are joining D with C. Now, since we want to prove AD by BD, so at first we are taking from here. At first, from this figure, we are taking such a triangle where AD must be there as a base. We are taking such a triangle where AD, the side AD must be there as a base. Then we realize that we can take triangle ADE. Okay, ADE, and we are finding the area. Okay, area of triangle ADE, and by using our triangles formula, that is 1 by 2 into base. Base is AD, we are taking over here AD, and height into height. Height we are taking over here. Can you tell me what will be the height over here? Abdul, Ayan, Ifra, what will be the height? Alvina, Aisha. Yes, Aisha, you was present in the last class? No, ma'am. Okay. So we are discussing. I'm not able to say. Okay. We are discussing here one theorem that is called basic proportionality theorem. The theorem says that we have not, like last class also I was just explaining it. This class also I will be explaining it, and I have said to everyone that we will be discussing it until or unless it will be on your tips, and then I'll be showing you the fair portion. So basically the theorem says that, Aisha, for you I'm telling you the theorem because rest of the student knows what exactly is the theorem. The theorem says that if we are having a triangle, okay, suppose ABC, and if we are having a line parallel to one of the side, so suppose we are having a line DE parallel to the side BC, okay, and this line DE is also intersecting the other two sides. Okay, it is touching the other two sides AB and AC at D and E. So basically a triangle we are having, a line we are having which is parallel to one side of a triangle and touching the another two sides. Then this ratio AD by DB, this ratio must be equals to AE by EC. That's what we are trying to prove over here, and this theorem is called basic proportionality theorem. Okay, so let's discuss it, how we will be proving it. So since we want, is it clear, Aisha, the theorem? Okay, basically we want to show the ratios must be same. So for that we have done few construction over here. What we are doing, okay, you will not be getting here also, no worries, I'll be explaining in between. So from D we are dropping a perpendicular. Okay, one construction we are doing, from D we are dropping the perpendicular, and altitude we are making. From E also we are making an altitude, a perpendicular we are dropping. These are the construction we are doing, okay, which will help us proving it. I am naming it M. I am naming
it N. Okay, and apart from these two perpendiculars in our construction part, we are also joining B with E and D with C. This much construction we are doing. Let me write it if it is creating confusion to you. In the construction, for proving it, what we are doing, we are dropping a perpendicular. We are saying that DM is perpendicular to AE. We have drawn this perpendicular. We have drawn one more perpendicular, that is EN is perpendicular to AD. And apart from that, we have joined B, joining B and E. Okay, and also joining C and D. This much construction we are doing. Now I was telling everyone that since we want to prove AD, this proof is AD by BD. Hence we are taking such, we are choosing a triangle. We are trying to choose a triangle where AD will be the base. Okay, we will be choosing such a triangle where AD will be the base. Okay, we are going to, Ma'am, how do we know that if this is the base? Why are we not considering BD as the base? can you repeat? Ma'am, I'm saying, why do we consider AB as the base? Why AD we as a cannot base means, consider BD? no, the numerator part. As at first we are trying to arrange the numerator. Okay, this AD, then we will come to BD, then we will come to BD. But at first, since in the proof part AD is reflecting, so at first we are trying to take such a triangle and we will be finding the area of that triangle, but there AD must be the base. Yes, Okay, this is our approach. Okay, same thing we will be doing for all these sides. So first we are going to focus on this AD and we are going to pick a triangle. We'll be finding the area of that triangle, but there AD must be the base. So can we take this triangle, the smaller triangle, and we will say that here AD is the base. Can we take that? And what will be the height? Yes, EN. Aisha. Yes, Aisha, do you know EN is the height over here? For AD as a base, EN will be the height. Do you know Aisha? हाइट किसे बोलते हैं? ट्रायंग, किसी भी ट्रायंगल में हाइट किसे बोलते हैं और बेस कैसे डिसाइड करते हैं? तो हाइट हमें जिस by भी the वर्टेक्स से, perpendicular. यस, हम हाइट यहाँ से इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे भी हाइट बोल सकते हैं. हम हाइट इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ करके इसे भी हाइट बोल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ करके इसे भी हाइट बोल सकते हैं. ओके, लेकिन बेस चेंज होगा हाइट के साथ साथ. तो अगर ये हाइट है तो ये बेस होगा. जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसे ही बेस बोलते हैं. जो ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे बेस हमेशा नहीं बोलते. जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उससे बेस बोलते हैं. तो यहाँ अगर ये हाइट है तो बेस ये होगा, यहाँ अगर ये हाइट है तो बेस ये होगा. एम आई मेकिंग सेंस आयशा? गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, the rest of the student you must be getting it. So we are taking area of triangle AD 1 by 2 into base into height. AD is the base and height, as Ayan said, that height will be EN. We will keep it aside for now. Now we will focus on BD. We will focus on BD. हमें एक ऐसा triangle choose करना है और उसका एरिया हम फाइंड करेंगे ऑफ कोर्स, एंड वहां BD एज अ बेस आना ही चाहिए. BD, ध्यान से देखो BD. ओके, तो ये साइड BD एज अ बेस हमें लेना है. तो हम कौन सा ट्रायंगल चूज कर सकते हैं? हु विल से? BDE. Yes, we will be taking the triangle BDE. Okay, and here 1 by 2 into base. BD base होना ही Ma'am, can you चाहिए. explain this again? मैं बोल रही हूँ कि For BDE. हमारे प्रूफ पार्ट में अब क्या है,
डेनोमिनेटर में बी डी है, तो हम हमारे फिगर से एक ऐसा ट्रायंगल चूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बी डी हम बेस ले सके। बेस मतलब हम एरिया फाइंड करेंगे और वहां पे बी डी एज अ बेस आना ही चाहिए। तो अभी अभी आयान ने बोला कि हम ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, यहाँ हम बी डी को बेस ले लेंगे। गेटिंग इट आयशा? Yeah. Okay. Now height. What will be the height over here? Who will say? Height क्या होगा? हमने ये ट्रायंगल लिया है बी डी ई, यहाँ बेस तो बी डी है, ये क्लियर है, बट हाइट क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया का, तो बी डी इज द बेस एंड व्हाट विल बी द हाइट? ध्यान से देखो, यही हाइट होगा ई एन, क्योंकि किसी भी ऐसा भी सिनेरियो एग्जिस्ट करता है कि ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट करता है मैथ्स में, when you will be having a triangle and the height you will try dropping and it is lying outside the triangle। अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो एबीसी का, and this is d, then you will be taking 1/2 into base into height। अगर हम हाइट AD ले रहे हैं, अगर हम हाइट AD ले रहे हैं तो हमें बेस BC ही लेना पड़ेगा, क्योंकि BC को एक्सटेंड करके AD से इंटरसेक्ट कर पा रहा है। अभी अभी मैंने बोला बेस कैसे सेलेक्ट करते हैं? एक ऐसा साइड जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो। तो यहाँ पे कौन सा साइड बेस होगा? BC, क्योंकि BC को एक्सटेंड कर रहे हैं तभी परपेंडिकुलर उस पे ड्रॉप हो रहा है। लेकिन सिर्फ BC लेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं लेंगे, सिर्फ अपने ट्रायंगल पे फोकस रखेंगे, हाइट का लेंथ लेंगे और बेस हमारा BC ही रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? एम आई Yes. मेकिंग? ट्रायंगल ऐसा भी सिनेरियो मैथ्स में एग्जिस्ट करता है जब ट्रायंगल का हाइट ट्रायंगल के बाहर लाई कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, हम अपने ट्रायंगल वाला बेस ही यूज करेंगे और हाइट हमने जो बाहर की तरफ ड्रॉप किया वो हाइट यूज करेंगे। बट वी विल बी केयरफुल, वी विल बी यूजिंग द बेस which after extending that base only we will, like it must meet, it must intersect the height। ये BC साइड ही हम एज अ बेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि BC को ही एक्सटेंड कर रहे हैं तभी ये हाइट इस पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, और एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो ये, अगर हम BC एंड AD को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। सेम कंसेप्ट, अगर हमने ट्रायंगल BDE लिया है, okay, keeping in mind that we must take BD as a base, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के प्लेस पे क्या मैं EN ले सकती हूँ, हाँ या ना? यस और नो? Yes, Yeah. ma'am. एवरीवन गेटिंग इट? एवरीवन गेटिंग इट? इफ्रा, अलवीना, अब्दुल, आर यू गेटिंग इट? This side we have taken as a base, and from here we are trying to drop the perpendicular which is lying outside. That is completely fine. Focus over here. This is our perpendicular which we tried dropping from the vertex E, okay, and it is lying outside. So the area of triangle will be 1/2 into base is BD and height is EN. Is it crystal clear so far? Is it crystal clear? मैं फिर से बता रही हूँ, हम हमारे प्रूफ में क्या है? AD by BD is equals to AE by EC। सबसे पहले हमने AD पे फोकस किया, हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसका एरिया हम फाइंड करेंगे, लेकिन वहां AD बेस एज अ बेस आना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया कि ADE ट्रायंगल हम ले सकते हैं, एंड 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमने फॉर्मूला यूज करा। Okay, now
डेनोमिनेटर में BD है हमारे प्रूफ पार्ट में, तो अब हम एक ऐसा ट्राइंगल चूज करें जहां पे अगेन एरिया फाइंड करेंगे और BD एज अ बेस आना ही चाहिए। तो हमने ट्राइंगल BDE ले लिया, यहाँ BD को एज अ बेस ले लिया और हाइट हमारा ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है EN, एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन। यहाँ तक सबका क्लियर है? इज इट क्लियर सो फार टू एवरीवन? Let me ask one by one. Aisha, is it clear? Yes, ma'am. Ayan, is it clear? Yes, ma'am. Alvina, is it clear? Alvina, are you there? Alvina, are you there? Abdul, is it clear? Ifra, Alvina, and Abdul. Please reply. If you will be saying no, I'll try explaining another way. Please tell me, is it clear? Yes or no? Please tell me. Ifra, Alvina, and Abdul, is it clear? Can we move ahead or shall I explain it one more time? Ma'am, what is the name of this theorem? Basic proportionality theorem, Aisha, or Thales theorem. We also call it BPT theorem. Okay, basic proportionality theorem or Thales theorem. Since mathematician Thales has given this theorem, so we also call it Thales theorem. Okay, so Abdul has responded, it is clear. Ifra and Albina, is it clear so far? Yes or no? Shall I start explaining or shall I proceed? See, why I'm not starting again the explanation, because I'm not sure whether it is not clear to you or you are not connected with me or you are having network issue or you can't say. If right is clear. Alvina, is it clear? Okay, I'm proceeding. If it is not clear, Alvina, at least in the message chat box, please reply. Now other side, AE is there. AE. फिर से हम वही करेंगे, हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जहां पे AE एरिया हम फाइंड करने वाले हैं, बट वहां AE क्या होना चाहिए? AE एज अ बेस हमें मिल जाए, क्योंकि AE को तो हम हाइट बना नहीं सकते, तो चलो एज अ बेस ही। ओके, दिस AE मस्ट बी देयर एज अ बेस। व्हाई आई एम सेइंग एज अ बेस, एज अ बेस क्योंकि ये साइड्स है ट्रायंगल के, इसे हम कैसे भी करके हाइट नहीं बोल सकते। That's why I'm saying at least we need this AE. 1 by 2 into base into height. There this AE we need. या तो as a base या फिर as a height. तो as a height तो हम this we cannot take this AE. That's why I'm calling it. Let's take it as a base. Okay. So ऐसा एक triangle Ma'am, can जिसका you हम say like DM is the perpendicular, that's why AE can be the base? yes we will be saying Aisha. Okay. We will be taking a triangle, again area of triangle ADE, and here we will say 1 by 2 into base into height. Here base is AE we want to take, and height is of course DM is the perpendicular. How we are proceeding? See how we are proceeding. We are keeping our eyes, one eye is on the proof and another eye we are just using for proving it. Okay, now the denominator in the proof is EC. अब हमें एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें EC प्रेजेंट हो। कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं हम? Who will say? EC would be what, height or the base? हाइट तो हो नहीं सकता आयशा, कैसे भी कुछ भी करे हाइट नहीं बना पाएंगे, हमें CC को एज अ बेस ही बोलना पड़ेगा।
इसीलिए डी मैं बार ई सी। बार डी ई सी, ओके, डी ई सी। अगर हम ये ट्रायंगल ले तो यहाँ हमें ई सी मिल सकता है। हमें क्या चाहिए, या तो एज अ हाइट एरिया के फॉर्मूला, हम क्या करें, एरिया वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट या तो एज अ बेस या फिर एज अ हाइट, हमें ये जो हमारे प्रूफ में दिख रहा है ना, ये साइड्स हमें चाहिए। तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये साइड्स हाइट नहीं बन पाएगा, इसीलिए एज अ बेस हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो ईसी, ध्यान से देखो हम कौन सा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। इस बार हम लेने जा रहे हैं ये ट्रायंगल, और यहाँ हम लेंगे ईसी को बेस। अगर हमने ईसी को बेस लिया, मतलब कि परपेंडिकुलर हमें डी से ही ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर हम परपेंडिकुलर डी से ड्रॉप करें तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, और ये कंप्लीटली नेचुरल, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, तो हमारा बेस ईसी है और हमारा हाइट डीएम है। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट Yes. क्रिस्टल क्लियर सो फार? हमने हमारा ध्यान हमारे प्रूफ पे रखा और ऐसे करके हमने 4 ट्रायंगल निकाले। ओके, प्रूफ में जो न्यूमरेटर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया, एरिया का फॉर्मूला यूज किया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमें या तो बेस या फिर हाइट, हमें ये एडी चाहिए था, एरिया जो हमने फॉर्मूला निकाला। तो एडी हमने एज अ बेस लिया, और हाइट ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करके रखा है, वही हाइट हमने यहाँ। सिमिलरली डेनोमिनेटर में बीडी है प्रूफ पार्ट में, तो हमने अगेन एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें बीडी साइड हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अदर साइड में एई है, हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें एई साइड must be there, and again the denominator is AC. We have taken such a triangle where the denominator AC EC must be there. ऐसे करके हमने 4 ट्रायंगल के एरियाज फाइंड कर लिया। नाउ अगेन वी विल कीप आवर आईज ऑन द प्रूफ, और हमें ये दिख रहा है कि हमारे प्रूफ में तो रेशियो है, हमारे प्रूफ में तो रेशियो है, तो क्या हम यहाँ रेशियो निकालना शुरू करें? यस, हमारे प्रूफ में रेशियो है, तो यहाँ भी हमें रेशियो ही फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड इट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज रिलेशन 2, ओके, दिस इज इक्वेशन 3, एंड दिस इज इट 3, एंड दिस इज 4। हमारे प्रूफ में क्योंकि रेशियो में है, जो भी टर्म्स है लाइक ए डी बाई बी डी, ये रेशियो में है, तो हमें यहाँ एरियाज का रेशियो फाइंड करना होगा। पहले हम रेशियो किसका फाइंड करेंगे? 1 and 2 का, क्योंकि इक्वेशन 1 में एडी है एंड इक्वेशन 2 में बीडी है। तो लेट्स फाइंड द रेशियो। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे? एम आई मेकिंग सेंस? Yes. ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियो 1 डिवाइडेड बाई 2, रेशियो फाइंड करेंगे। दैट मीन्स क्या हम ये कहना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी का रेशियो हमें मिला अभी 1/2 into base was AD into EN, and here 1/2 into BD into E। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने इजीली 1/2 कैंसिल कर लिया, एंड EN सेम साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ सेम साइड का लेंथ है, तो हमने ये भी कैंसिल कर दिया। AD बाई BD हमें मिल गया। तो अब तक तो ये लग रहा है कि हम राइट ट्रैक पे हैं। आर यू गेटिंग इट? Yes. Okay, now we'll be finding the ratio between 3 and 4 also, because हमारे प्रूफ पार्ट में अनदर साइड में एक और रेशियो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कि AE by EC है। Okay, so we will be finding the ratio between equation 3 and equation 4, and let's see what are we going to get. Area of triangle AD by area of triangle DC.
1 by 2 into AE into DM. 1 by 2 into, let's check, EC into DM. और यहाँ भी DM DM कैंसिल हो जा रहा है, 1 by 2 कैंसिल हो जा रहा है, और अभी भी हमें लग रहा है कि हाँ, अब तक तो हम राइट ट्रैक पे ही हैं. ओके, now we need to prove that equation number this, let's call it a new equation, and whatever we got from here, let's call it equation number 5, and this one is equation number 6. अगर हम कैसे भी करके इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को कंपेयर कर दे, कोई भी लॉजिक, कोई भी कंसेप्ट जो काम करे, okay, whatever will be applicable, of course will be sticking to concept only. Randomly we will not do the comparison. Okay, mathematically it must be valid. Anyway, if we can do the comparison of equation 5 and equation 6, then we can say that AD by BD is equals to AE by EC. Yes or no? Yes or no? अगर हम कैसे भी करके इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को बोले कि दोनों तो सेम ही है, दोनों इक्विवेलेंट है, तो हम प्रूफ कर पाएंगे जो भी हमें प्रूफ करना है, हाँ या ना? Yes. राइट, अब ध्यान से देखो. ओके, राइट साइड हम कैसे भी इक्वेट कर देंगे तो हम अपने प्रूफ तक पहुंच जाएंगे. अब लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, ट्रायंगल ADE, यहाँ क्या है, ट्रायंगल ADE. अरे वाह, अब तक तो सब कुछ सेम है. If the denominator is also same, then we can do the comparison. But our denominator is not same. Here BD we are having, and here DEC. Here BD we are, numerator तो सेम है, बट अगर काश हमारा डेनोमिनेटर भी सेम होता, सेम सेम एरिया होता, तो हम दोनों ही इक्वेशन को इक्वल लिख देते और हम कह पाते कि या वी आर डन विद द प्रूफ. एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Am I making sense? Ayan, Yes, Abdul, ma'am. Isra, Alvina. Am I making sense? So numerator is already same, but the denominator is still not same. Let's focus on our figure. थोड़ा देर हम अपने फिगर पे भी ध्यान देते हैं कि क्या हम बोल सकते हैं कि डेनोमिनेटर वाला एरिया तो सेम होगा ही. हाँ, लेट्स सी. हमारे पास ये फिगर था ABC, मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ सेम फिगर. दिस वाज DE. हमने D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और उसे नेम दिया था DN, और हमने E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था और उसे हमने नेम दिया था EN. उसके अलावा हमने B एंड E को ज्वाइन कर दिया था कंस्ट्रक्शन पार्ट, एंड E एंड C को भी हमने ज्वाइन कर दिया था. हमें क्या प्रूफ करना है, कैसे भी BDE एंड DEC, BDE एंड DEC, ये दोनों ट्राइंगल पे हम अपना थोड़ा फोकस रखेंगे. BDE एंड DEC. अगर कैसे भी करके हम ये बोल पाए कि ये जो पर्पल कलर ट्रायंगल है एंड ये जो रेड कलर ट्रायंगल है, ये दोनों एरिया तो सेम ही होगा, then we'll be able to prove whatever we want to prove. ध्यान से सोचो. ओके, ध्यान से सोचो कि हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है. एक थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर सेम बेस पे ट्रायंगल हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है. बट ये थ्योरम आया कहाँ से ऑल ऑफ सडन? लेट मी शो इट टू यू. When we are having It is two a Newton's parallel theorem. triangles, we write it, between two parallel lines having the same base, I must write area of triangle. Area of triangles between two parallel lines
having the same base is same. अगर हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल है जो पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस के ऊपर है, तो उन दोनों का एरिया सेम ही होगा। कहाँ से ये थ्योरम आया? लेट मी शो इट टू यू। ये थ्योरम कहाँ से आया? एक्चुअली हमारा DE एंड BC पैरेलल है, राइट। यहाँ से ये थ्योरम ओरिजिनेट हुआ था कि अगर एक लाइन पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो हमारा DE एंड BC पैरेलल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहीं भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे सारा सेम होगा। कैन वी से दैट इफ दिस इज x, दिस विल बी x, दिस विल बी x, दिस विल बी x, Yes. since these two are parallel lines? Yes, these two are parallel lines, so distances must be same. That is the property of parallel line कि parallel line के बीच का distance हमेशा same होता है, और जब भी हम distance बोल रहे हैं तो perpendicular distance की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। Now सेम बेस पे दो ट्रायंगल है, मतलब कि हमारा एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है और दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम दिस पर्पल वन एरिया फाइंड करें तो क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एंड अगर ये रेड वाले का एरिया फाइंड करें तो द सेम फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से सोचो, दोनों का बेस तो सेम ही है। अगर हम बेस को DE लेते हैं यहाँ, ओके, यहाँ भी अगर हमने बेस को DE ही ले रखा है, तो हाइट तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाइट तो सेम ही होगा, आया ना? आया ना? Ma'am, can you explain again? If we are taking the base as a DE, if we are taking the base as a DE, अगर ये पर्पल वाले ट्रायंगल में हमने DE बेस लिया तो हमारा हाइट क्या होगा? ऑफ कोर्स हाइट कुछ ऐसा दिखेगा, राइट आयशा? Yes. यस, एवरीवन अग्री कि हमारा हाइट कुछ ऐसा दिखेगा अगर हमने DE को बेस लिया है। और अगर हमने दूसरे रेड वाले ट्रायंगल में भी DE को बेस लिया है तो हमारा हाइट कुछ ऐसा दिखेगा। और अभी अभी हम यहाँ पे साइड वाले फिगर में बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारे सेम है, तो कैन आई से दैट दिस एंड दिस बोथ विल बी सेम? कैन आई से? क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइन है, एक्सटेंड भी करेंगे तो वो पैरेलल ही होगा आपस में। कैन वी से दैट? कैन वी कैन वी से दैट? Like if you extend the line and that from D and B, Still it will be then the parallel. height will be, sorry, the line will be perpendicular. Yeah. Can we say that this length and this length will be same because these two are parallel lines? Can we say? Ayan, Ifra, can we say that? Yes. Abdul, we can say that, right? That height will be same because this is just the perpendicular distance between two parallel lines. That's why this theorem, that area of the triangle between two parallel lines having the same base is same. Okay? Area, this two area will be same. Is it crystal clear so far? Again, I'll be taking a pause. Yes? Ifra, to you it is clear. Yes, Ayan, to you, is it clear? Ayan? Yes. Okay. Abdul, is it clear? Alvina, are you there even? Yes, ma'am. Clear. So now we are going to say, that this triangle area and this triangle area is same. Why? This statement. Area of the triangle between two parallel lines having the same base is same. This statement will be writing towards the right in a bracket and we are done. Okay, this much of explanation is not required. This is just the explanation.
So if we can say this two area, we'll be writing like this, but we'll be writing like this. Let me wipe the. We'll be writing. I'm writing it over. Okay, because I said to you, please don't note it down. You need to understand it. But triangle area of triangle BD is equals to area of triangle DEC. These two triangles are having same area. Therefore, we can do the comparison. We can say that AD by BD is equals to AE by EC, and hence proved. Is it crystal clear to all of you? Can we say that right left hand side हमारा exactly same है, इसीलिए हमने directly right hand side को लेके compare कर दिया. Are you getting it? We have just taken AD by BD is equals to AE by EC because हमारा numerator and denominator same है. Okay, equation 5 and equation 6 left side जो हमारे पास fraction है numerator में AD है, यहाँ पे numerator में AD, यहाँ denominator में BD है and यहाँ denominator में DEC है, but ये दोनों तो same area, these two will be having the same area. That's why we can do the comparison between the right side and hence we are done with the proof. Is it crystal clear so far? Now I am starting from the very beginning. Okay, मैं start कर रही हूँ starting से. हमारे पास एक triangle था. Wait. Yes. Ma'am, could you explain that again? I understood you're told to draw like an imaginary line to make those two lines parallel, but I did not understand the full thing. This one, Aisha. Yes. Okay, I am saying that when you are having a line and another line, can I say Aisha this distance will be same? This distance will Yes. be, if this is 2 centimeter, this will also be 2 centimeter. 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 That is the property of parallel line. पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. ओके, कोई भी ऐसे वैसे डिस्टेंस नहीं ड्रॉ करेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, वो सेम होता है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, मैं इस फिगर में दिखाती हूँ. अब हमारे पास यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ E है. ट्राइंगल लिया DBE, एरिया ऑफ DBE, और हमने दूसरा ट्राइंगल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल CD, और हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही होगा. नाउ ध्यान से देखो क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ 1/2, क्या हम इस साइड को बेस ले सकते हैं इस ट्राइंगल में? Yes. अभी अभी हमने डिस्कस किया किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं, बस हमें हाइट केयरफुली लेना होता है. चलो DE को बेस ले लिया जाए. DE को बेस ले लिया जाए. अब हाइट क्या होगा, हाइट हमें तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा. अभी अभी हमने सीखा कि जो बेस उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. अगर हमने ये वर्टेक्स B से ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश की तो हम देख पा रहे हैं कि ये ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है. बट मैंने ये भी बताया कि ये बहुत ही नॉर्मल है. ऐसा भी सिनेरियो एग्जिस्ट करता है कि कभी कभी हम हाइट ड्रॉ करने जाते हैं और ये पाते हैं कि हाइट तो ट्राइंगल के बाहर लाई कर रहा है, बट दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल. तो हमारा हाइट क्या हो गया, सपोज यहाँ पे एक, चलो नेम ले लेते हैं P, तो हमारा हाइट क्या हो गया BP. ओके, अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लेते हैं. चलो दिस ट्राइंगल,
और यहाँ भी हम पर्पसफुली ओके हम क्या लेंगे, बेस डीई को ही लेंगे, क्योंकि अभी हम डिक्लेयर करने वाले ये दोनों एरिया सेम है, तो हम सेम बेस ही यहाँ पे भी रखेंगे। और हाइट हम क्या लेंगे, तो चलो यहाँ भी एक हाइट ड्रॉप करके देखते हैं। तो सी से हमें हाइट ड्रॉप करना होगा, राइट। जो बेस हम लिए रहते हैं उसी के ऊपर हाइट ड्रॉप करते हैं। तो हाइट जब हम ड्रॉप करने जा रहे हैं तो हम फिर से पा रहे हैं कि हमारा हाइट तो ट्रायंगल के बाहर लाई कर, बट अगेन आई सेड टू यू दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, सो सी क्यू हमारा हाइट हुआ। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है Yes. आयशा। Yes. नाउ अब मैं बोलने जा रही हूँ, अब मैं बोलने जा रही हूँ कि ये जो बीपी है और ये जो सी क्यू है ये दोनों सेम है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे Parallel. पास पैरेलल लाइंस थे। डीई एक पैरेलल लाइन था और बीसी अनदर पैरेलल लाइन था। अगर हम डीई को एक्सटेंड भी करेंगे टिल पी एंड टिल क्यू, still it this like the extended line दूसरे लाइन के साथ पैरेलल होगा। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है, ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। मैं अगर शो करूं, एक हमारे पास एक लाइन है, ओके लेट्स कॉल इट ए बी एंड दूसरा लाइन है सी, ये आपस में दोनों पैरेलल है। अगर हम ए बी को छोटा भी कर दे, फिर भी ये जो द टिनी टाइनी पोर्शन ऑफ ए बी जो हमारे पास बच के निकला, ये अभी भी पैरेलल है सी डी के साथ, ठीक है। अगर हम सी डी को और एक्सटेंड कर दे, और एक्सटेंड कर दे, अभी भी ये जो हमारे पास टिनी टाइनी ए बी का पोर्शन बचा है, ये सी डी के एक्सटेंडेड पार्ट के साथ अभी भी ये पैरेलल है, ओके। तो एज अगर हमें ये समझ में आता है, दैट मीन्स कि हम डीई को एक्सटेंड कर रहे हैं पी तक एंड हियर क्यू तक, तो हमारा ये जो डिस्टेंस है बी पी एंड सी क्यू ये दोनों सेम होगा, आया ना। Yes, ma'am. अगर ये x है तो ये भी x होगा। इसका Yes. मतलब कि यहाँ जो हाइट बीपी के प्लेस पे हम x लिख सकते हैं और यहाँ सी क्यू के प्लेस पे भी हम x लिख सकते हैं, दैट मीन्स दोनों एरिया तो सेम ही है। ध्यान से देखो 1/2 इंटू डी इंटू एक्स, ध्यान से देखो 1/2 इंटू डी इंटू एक्स, 1/2 इंटू डी इंटू एक्स, सो दोनों तो सेम एरिया है, राइट। Yes, ma'am. एवरीवन गेटिंग इट? Getting it? Is it clear to everyone? Yes. Okay. So this is the whole explanation. So we say that AD by BD is equals to AC by EC. Then we can say, then since the left hand side is completely same with each other, that's why we are comparing the right. Okay. Okay. In the next class we'll be doing the proof. I'll be showing you everything from the very beginning. हमारे प्रूफ पे नजर रखते हुए हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें एडी साइड आए, एरिया फाइंड करते टाइम। सिमिलरली अगेन एक ऐसा ट्रायंगल लिया जिसमें बीडी आए। कंस्ट्रक्शन बस याद रखना, हमें क्या याद रखना है, Yes. बस कंस्ट्रक्शन और कुछ भी नहीं। Construction of perpendicular. कंस्ट्रक्शन में कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं बस हमें वही याद रखना है और कुछ भी नहीं। सिमिलरली एक Okay. ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए आना ही चाहिए, एक ऐसा ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे जिसमें ईसी आना चाहिए। ऐसे ऐसे चार ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे प्रूफ में तो रेशियो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम अपने एरियाज का भी रेशियो फाइंड कर रहे हैं। जब हम एरिया का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम हो गया। ये जो 4 एंड 5 हमने अभी 5 एंड 6 अभी हमने क्रिएट किया, यहाँ न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम है एरियाज वाले साइड में, Yes. लेफ्ट साइड, बट डेनोमिनेटर सेम नहीं। तो यहाँ बस हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और डेनोमिनेटर भी सेम होगा। स्टेटमेंट होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन हैविंग द सेम बेस विल बी सेम। ऐसे दो ट्रायंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में है जिनका बेसिस सेम है उनका एरिया सेम ही होगा। ये बस स्टेटमेंट हम साइड में पेस्ट करेंगे और हम लिख पाएंगे कि BDE एंड DEC का एरिया सेम है, and therefore Okay. we are done with the proof. Is it crystal clear to everyone? Yes, ma'am.
नेक्स्ट क्लास में मैं सब कुछ फेयर क्वेश्चन में लिखूंगी एंड यू विल बी जस्ट कॉपीइंग फ्रॉम मी, ओके। Okay. बिफोर द नेक्स्ट क्लास खुद से क्या करना है, खुद से रफ पोर्शन में क्विक क्विक क्विक